सोचो जरा, एवरीथिंग दैट यू ओन, राइट फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू योर लैपटॉप टू योर बैंक बैलेंस, योर गोल्ड, योर होम, योर कार, एवरीथिंग, इफ दे कुड स्पीक, वो क्या बोलते? They would proudly say that we are your assets. We help build your financial strength. But don't trust them all. All of them are not equal helpers. Some of them are very quick helpers, whereas some of them are very slow helpers. In today's session, we will dive deeper into the world of assets and its types. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Let's start understanding what is the meaning of assets. Assets means simply your property. आपके ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जो फाइनेंशियल वैल्यू कैरी करते हैं. नाउ ऑल एसेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. If we broadly try to categorize assets, we can categorize them into three different categories. Either the assets will be fixed assets, or the assets will be current assets, or they will be fictitious assets. Starting with fixed assets first. Fixed assets, as the name suggests, are such assets which remain invested in the business for a longer period of time. बिजनेसमैन उनको परचेज करता है, बिजनेसमैन उसमें अपना मनी इन्वेस्ट करता है so that they can help in smooth functioning of business. And बिजनेसमैन उनको रीसेल पर्पस से परचेज नहीं करता. So those assets which remain invested in business for a longer period of time. Those assets which are purchased for the purpose of investment in the business and not for the purpose of resale are known as fixed assets. Further, the fixed assets can be categorized into two subcategories. Either the fixed assets will be tangible assets or they will be intangible assets. Tangible assets मतलब all such assets जो physical form carry करते हैं. The assets which you can touch, which you can see, जिसका physical form है, those assets are known as tangible assets. You can take the example of your land and building. You can take the example of motor vehicle that you are using in your business. You can take the example of furniture, your plant and equipments. These are all your tangible fixed assets. They all are having physical form. आप उनको देख सकते हो, उनको टच कर सकते हो, and thus they are your business's tangible assets. Opposite to that, intangible assets मतलब those assets which do not have any physical form, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख भी नहीं सकते, एंड फिर भी वो मॉनिटरी वैल्यू कैरी करते हैं. Then such assets are known as intangible assets. You can say that the goodwill of the business. Goodwill is nothing but the reputation of the business. आपकी goodwill अच्छी है, मार्केट में आपकी reputation अच्छी है, तो because of that आपको ज्यादा earning होगा. तो as such goodwill दिख नहीं सकती. You cannot say that my goodwill is round in shape. You cannot say that my goodwill is glittery in nature. It is very shiny. It is very bright. You cannot say that because you cannot see it, because it don't have any physical form. But still, because of your goodwill, your earning capacity will increase, and thus goodwill is your intangible asset. Then another example of intangible asset is patents. For example, if you are a firm manufacturing, say suppose air conditioners, आपने एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करने की कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, एंड नाउ यू डोंट वांट एनीबडी एल्स, एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटर टू यूज दैट टेक्नोलॉजी. तो आप सिंपली वो टेक्नोलॉजी का 5 years 10 years के लिए पेटेंट ले सकते हो. एंड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नोबडी एल्स कैन यूज इन द मार्केट. वो 5 साल 10 साल जितने भी पीरियड के लिए आपने पेटेंट लिया है, for that many years you alone will be able to use that technology, and because of that technology, तो you cannot see your patent, but उससे आपको 5 साल या 10 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट होगा.
because you cannot see it, but economic benefit तो हो रहा है. Then patent is your intangible asset. You can take an example of copyright. You might have seen in many of your books that book के फ्रंट पेज में एक छोटू सा C and circle होता है. That is copyright. The author of the book has taken the copyright of the book. That means nobody else than the author has got the right to publish that book, has got the right to earn from that book or the content of that book. Now जिस भी किसी बुक का, जिस भी किसी पीस ऑफ म्यूजिक का, जिस भी किसी डांस स्टेप का आपने कॉपीराइट लिया है, उससे जब भी कभी फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो खाली कॉपीराइट लिए हुए पर्सन को ही होगा. Again, you cannot see that copyright. You cannot say that my copyright is very fatty in nature. It is very slim and trim in nature. It is having zero figure. You cannot see them. You cannot touch them. It don't have any physical form. But still, copyright लिया है तो फिर आपको economic benefit तो होगा. And as copyright is your intangible assets. And so once again, intangible assets are such assets जिनका कोई physical form नहीं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको देख नहीं सकते, but still उनके आपके बिजनेस में होने से आपको economic gain होंगे, economic benefits होंगे. Then those assets are your intangible assets. Now let's understand current assets. Current assets मतलब ऐसे assets जो आपको current देते हैं. No. Current asset doesn't mean जो assets आपको current देते हैं. But current assets are the assets which remain invested in the business for a very shorter period of time. Businessman इन assets में invest करता है so that in future whenever he is in need of cash he can sell them off quickly and get the cash quickly. These are those assets जिनकी value daily fluctuate होती है. Maybe 100 times in a day जिनकी value up and down होती है, fluctuate होती है. Those assets are known as current assets. You can take the example of stock of goods that you are dealing in is your current assets. दिन में 10 बार आप stock sale करोगे, दिन में 50 बार आप purchase करोगे. And thus the value of stock will keep on fluctuating. Then stock is your current asset. Again, stock कोई भी businessman purchase करता है so that he can resell it and earn cash out of it. So stock is your current asset. Cash balance is your current asset. When morning में आप shop open करोगे, maybe आपके drawer में 5,000 cash होगी. 5,000 cash में से आप दिन में कितने सारे payments करोगे, आप दिन में कितने सारे receipts करोगे. And thus cash की 5,000 balance at the end of the day it may be something else. So जिसकी value fluctuate होती है, those assets are current assets, and as of that your cash balance is your current asset. Your bank balance is also your current asset. Even your debtors are your current asset. दिन में आप कितने सारे कस्टमर्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हो. जब आप क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हो डेटर्स बढ़ते जाते हैं. पिछले डेटर्स से कितनी बार दिन में मे बी आप पेमेंट रिसीव करते होगे, सो डेटर्स कम होते जाते हैं. एंड लाइक दिस डेटर्स वैल्यू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड दस डेटर्स आर ऑल्सो योर करंट एसेट्स. सेम वे योर बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो योर करंट एसेट्स. सेम लाइक डेटर्स, उनकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है. सो वंस अगेन करंट एसेट्स मतलब दोज एसेट्स which remain invested in business for a very shorter period of time, जिनकी value every now and then fluctuate होती है, जिनको cash में quickly convert करना possible होता है. And these are the examples of current assets. Moving on to the last category of asset, fictitious assets. Now actually fictitious assets are not assets. अगर assets नहीं है तो फिर वो क्या है, तो फिर एसेट्स की कैटेगरी में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं. तो दे आर द एक्सपेंसेस. दे आर सच एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमको बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है. देन सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज एसेट्स
and such assets are known as fictitious assets. से सपोज आपकी स्कूल ने आपके टाउन के प्राइम लोकेशन पे एक मस्त सा होर्डिंग लगाया फॉर एडवर्टाइजमेंट. आपकी स्कूल ने होर्डिंग जब करंट फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, से सपोज 1/4/25, उस दिन लगाया एंड होर्डिंग के आपकी स्कूल ने 10 लाख रुपीज पे किए. एंड जिस प्राइम लोकेशन पे होर्डिंग लगाया था उस प्राइम लोकेशन में 10 लाख रुपीज पे करके ये होर्डिंग 5 इयर्स तक रहेगा. एंड दस 10 लाख रुपीज का खर्चा 2025 के ईयर ने किया, बट उसका बेनिफिट आने वाले 5 इयर्स 2030 तक मिलेगा. देन दिस एक्सपेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, बट इट विल बी ट्रीटेड एज फिक्टिशियस एसेट. नाउ 10 लाख रुपीज के एक्सपेंस को अगर हम 5 इयर्स में बाइफिकेट करें, देन एवरी ईयर expense will be 2 lakh. So once this 25 wala academic year will get over on 31st March 26, आप 2 lakh rupees को as an expense write off करोगे, you will be left back with 8 lakh rupees on 1/4/26. 1/4/26 को ये होर्डिंग का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस is of 8 lakhs and thus 1/4/26 के दिन में 8 lakhs का आपका fictitious asset हुआ. अगेन जब 26 वाला एकेडमिक ईयर पूरा होगा on 31st March 27, you will again write off 2 lakh rupees and you will be left back with 6 lakh as on 1/4/27. So on 1/4/27 जो बचे कुचे 6 लाख है, that is your fictitious asset. And like this 10 लाख एक्सपेंस आपके 25 के ईयर ने किया, बट उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन आवर केस 5 कमिंग ईयर्स के लिए मिलेगा. Then this 10 lakh won't be treated as expense, but it will be treated as asset, and such assets are known as fictitious assets. I hope that whatever we discussed in today's session, diving deeper into the world of assets, is very much clear to you. In the upcoming session, we will be discussing the remaining of basic accounting terms. Until then, stay tuned and goodbye.